So welcome everyone for the next video on blockchain technology. Okay. तो इस वीडियो में हम कुछ फंडामेंटल डिस्कस करेंगे ब्लॉकचेन की और एक जो मिथ है बिटवीन द ब्लॉकचेन एंड द क्रिप्टो करेंसी वो मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा कि ब्लॉकचेन एग्जैक्टली क्या है एंड हाउ इट इज बीइंग अप्लाइड इन द डिजिटल करेंसी फील्ड। ओके, सबसे पहले समझते हैं ब्लॉकचेन क्या है। तो इट इज हैविंग टू वर्ड्स, वन इज ब्लॉक एंड अदर वन इज चेन, राइट। तो यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि डेफिनेटली इट इज अ चेन ऑफ ब्लॉक्स, राइट। ब्लॉकचेन बेसिकली क्या है? ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है जिसे हम किस लिए यूज करते हैं। दैट इज अ डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी, और यू कैन थिंक इट ऑफ लाइक डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस जहाँ पे हम अपनी ट्रांजेक्शन्स को स्टोर कर सकते हैं, और साथ ही साथ ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है अगेंस्ट द टेम्परिंग ऑफ एनी ट्रांजेक्शन और एनी डेटा, राइट। तो ब्लॉकचेन की काफी सारी एप्लीकेशंस हैं नाउअडेज, जैसे लैंड रिकॉर्ड्स में यूज हो रहा है, हेल्थ रिकॉर्ड में यूज हो रहा है। तो ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है। क्रिप्टो करेंसी क्या है? क्रिप्टो करेंसी इज अ एप्लीकेशन ऑफ ब्लॉकचेन। सो क्रिप्टो करेंसी इज अ डिजिटल करेंसी एंड द अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट इज एक्चुअली द ब्लॉकचेन। ठीक है। अब ब्लॉकचेन वर्ड कहाँ से आया? ब्लॉकचेन एक एनोनिमस पर्सन थे, सतोशी नाकामोटो। तो उन्होंने 2008 में एक वाइट पेपर जनरेट किया, वाइट पेपर लिखा ऑन द ब्लॉकचेन एंड द बिटकॉइन। उन्होंने बिटकॉइन इंट्रोड्यूस किया 2008 में, और जो फर्स्ट टाइम जो माइनिंग हुई थी बिटकॉइन की, इट वाज इन जनवरी 2009, राइट। अभी नहीं पता है एक्चुअली हु एक्चुअली वाज सतोशी नाकामोटो। बहुत सारे लोगों ने क्लेम किया है कि दे आर सतोशी नाकामोटो, बट दैट इज व्हाई आई सेड एनोनिमस पर्सन। ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट कब आया? इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2008। ठीक है। नाउ now blockchain has many meanings. So if you go by the trust machine economics, this article, so it says that to understand the power of blockchain system and the things they can do, it is important to distinguish between the three things that are commonly muddled up, जिसके बारे में हम कंफ्यूज रहते हैं। सबसे पहला बिटकॉइन करेंसी, जिसे हम क्रिप्टो करेंसी भी बोलते हैं। Specific blockchain, that is the technology, underlying technology, and the idea of blockchain in general, यानी कि we can use this technology in several other fields जहाँ भी हमें we need a kind of security against the tampering. Some data is being stored, and it may be tampered, so what we can do is we can have a decentralized approach. ठीक है, decentralized approach यहाँ पे हम यूज करते हैं। All right, so let us take the example of a phone. What we are having is, like you can see the phone. So there is a there are three things. One is idea of a phone network. Similarly, there is a idea of, so analogous situation is idea of blockchain. Then specific phone network. Basically, this specific phone network is a kind of a specific application we are talking about, right? So cryptocurrency like Bitcoin, like Ethereum. Ethereum is a blockchain. Solana. These are the examples of blockchain. So these basically the underlying technology is blockchain technology. ठीक है, तो ये सारी इनकी एप्लीकेशंस है, डिजिटल करेंसी एप्लीकेशन। तो बिटकॉइन इज अ डिजिटल करेंसी। देन द स्पेसिफिक यूज ऑफ द फोन नेटवर्क। Similarly, so this Bitcoin or Ethereum, these blockchain we can use in other applications also, जहाँ भी हमें we need a security against the tampering. Main idea is the to make things tampered proof, right? And we should be able to track the changes also. जैसे भी लैंड रिकॉर्ड्स में क्या होता है कि दे मे बी टेम्पर्ड एज वेल एज वी कैन, कोई भी प्रॉपर्टी अगर है तो उसकी हम ट्रैकिंग कर सकते हैं, राइट।
कि अगर प्रॉपर्टी किसी ने सेल की और दूसरे ने परचेज की है, so what is that kind of what is that sequence that we can track, as well as we can keep it secure against the tampering. Okay. What is a blockchain? Blockchain is a technology, आप समझने की कोशिश करेंगे, that permits transaction to be gathered into block. Now what is a block basically? तो अभी डिटेल में फिर किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे एग्जैक्टली ब्लॉक्स में क्या क्या होता है, बट आप फॉर द टाइमिंग ये समझ सकते हो, ब्लॉक would contain the list of transactions. जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है उनका कलेक्टिवली हम, obviously block will have the other information also, but main thing in the block is the list of transactions, right? So we call it ledger. So what is ledger? Ledger is the collection of all those transactions. तो यहाँ पे क्या है, distributed ledger है, rather than a centralized ledger we are having a distributed ledger. And blockchain also use the concept of cryptography. So if you want to study the blockchain, then you need to understand the basic cryptographic concepts, right? So I'll show you how exactly the blockchain would look like, and how exactly the block would look like, right? And this ledger is actually, as I said, it is distributed, so it will be distributed on the different machines, right? Multiple machines, multiple uh, nodes will have the same copy of this ledger. So that is why this cannot be modified. And if there is some need of modification, तो कहीं ना कहीं क्योंकि decentralized approach है, तो all the nodes जिन्हें हम बोलते हैं miners, all the nodes would be involved, right? सबको involve कर रहे हैं, ऐसी कोई centralized authority नहीं है, ठीक है? जैसे अब यहाँ पे देखो, ये एक बैंक है and it is having multiple clients, right? So bank is the centralized, there is a centralized ledger bank, and bank is having all the information about the kind of account balance we are having, the kind of transactions we are having, right? So for the account balance of client B, there is no involvement of client A, client C, and client D. So that is why this is a centralized authority, right? This easily can be compromised. Okay, if some person is, let's say, modify your balance, so your account balance, your money can be easily compromised. Now, what happens in distributed ledger? In case of distributed ledger, there is no centralized authority. So, if I say there is a some list of transaction that is done by node A, so for that, for those transactions to be verified and all the nodes would be responsible, right? And all the nodes would have the copy of all the transactions, that is block. So there is no, there is a very rare possibility of modifying these list of transaction, modifying these blocks. All right. So this has been shown like how a single entity would work and how multiple entities would contribute in the blocks. Now, how the things would be done? So there are a lot of things that we need to understand. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एनी यूजर को हम क्या बोलते हैं जनरली, ब्लॉकचेन में हम बोलते हैं माइनर. सो एनी माइनर वुड बी इनिशिएटिंग द ट्रांजेक्शन यूजिंग देयर डिजिटल सिग्नेचर. सबसे पहला स्टेप ये होगा, वो अपने डिजिटल सिग्नेचर यूज करके कोई ट्रांजेक्शन इनिशिएट करेगा. अब देखो, इनिशिएट करने से नहीं होगा, दैट that transaction would be added to a block, or you can say a block would be added to the blockchain only when all the all the persons who are involved in the blockchain, or all the nodes would come to some sort of consensus. तो यहाँ पे consensus का concept आता है. तो एक यूजर क्या करेगा, जिसने भी अपनी ट्रांजेक्शन ऐड करनी है, वो ट्रांजेक्शंस को ब्रॉडकास्ट करेगा टू ऑल द नोड्स इन द ब्लॉकचेन. So that is a P2P network, right? So every node is connected to the every node can broadcast the messages to all other nodes in the blockchain, right? Now this transaction can only be verified, can only be accepted if it is validated by the by the majority of the nodes, right? So one node will begin validated each transaction. Now nodes aggregate validated transaction into blocks.
So that transaction would be added only when the majority of the nodes will validate it, right? So once that transaction is added to one of the blocks, so block is created. Now that block would be again broadcasted to the whole blockchain or all the nodes in the network, right? And here comes the consensus, that this is the most important part, right? Consensus means at least 51% of the nodes, of the total nodes in the blockchain, have to verify this block, have to validate this block, right? Then only this block would be considered as a true block or accepted block, and it would be added to the blockchain, right? So now, अब हम क्यों कह रहे हैं कि ये यहाँ पे टेम्परिंग प्रूफ है? देखो, कोई भी ऐसे ब्लॉक ऐड नहीं कर सकता, उसके लिए कंसेंसस हैज टू बी देयर, राइट? दैट मींस इन अ ब्लॉकचेन एट लीस्ट अ फॉल्स ब्लॉक, है ना, कोई भी फॉल्स ट्रांजैक्शन ब्लॉक के अंदर ऐड करके ब्लॉक तभी ऐड होगा जब 51% of the nodes has to be compromised, and that is a very rare and very difficult. Okay. अब क्रिप्टोग्राफिक कॉन्सेप्ट हम कौन कौन से यूज करते हैं? सो वन इज डिजिटल सिग्नेचर, देन प्राइवेट एंड पब्लिक की. सो दिस इज व्हेन वी आर इनिशिएटिंग एनी ट्रांजैक्शन. कोई भी जब नोड कोई ट्रांजैक्शन को इनिशिएट करेगी, इट विल यूज द डिजिटल सिग्नेचर एज वेल एज इट विल यूज द प्राइवेट एंड पब्लिक कीज फॉर एन्क्रिप्शन पर्पस. ओके. देन वैलिडेशन के लिए किसी भी ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करने के लिए क्या यूज होता है? प्रूफ ऑफ वर्क. Proof of work is a concept that is to validate the transaction. Other, अभी हम we are switching from the proof of work to the proof of state. Okay. Then to check to actually connect the different blocks to make the chain, we use the hash function. So I'll show you how this hash function is there. So this hash function will actually ensure कि कोई भी जो ब्लॉक के अंदर जो डेटा है, जो ट्रांजैक्शन है, उसे हम मॉडिफाई ना कर सके. If there is a slight modification in any of the data, any of the transaction, then it will actually make the blockchain, it will actually change the hash value. Okay. उससे जो अगले ब्लॉक्स भी हैं वो भी अनयूजेबल हो जाएंगे, right? So every other node in the blockchain would come to know that this is a false transaction. All right. And this can only be compromised if at least 51% of the nodes in the obviously it is providing the degree of trust between the users, right? मैंने आपको दिखा दिया कैसे डिग्री ऑफ ट्रस्ट वो प्रोवाइड कर रहा है, कैसे सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है. Consensus, I think we have already seen. So we have a distributed ledger. Now, what are the things that we need to understand? Let's say आप ब्लॉकचेन में वर्क करना चाहते हो, अपनी एप्लीकेशंस बनाना चाहते हो. So what things you need to understand is you can go for ethereum blockchain, right? ethereum blockchain आप यूज कर सकते हो. Then इसके लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? Then there comes a concept of smart contract. स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बेसिकली क्या होते हैं? दे आर लाइक पेपर कॉन्ट्रैक्ट्स. तो ये डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट्स है ना, डिजिटाइज कर दिया है कॉन्ट्रैक्ट्स को. तो दे आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्राम्स. तो इथेरियम के अंदर जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे लिखे होते हैं, दे आर रिटन इन सॉलिडिटी. क्या लैंग्वेज यूज होती है? सॉलिडिटी. तो दैट इज अ काइंड ऑफ लाइक जैसे जावा स्क्रिप्ट है, उसी तरह की कुछ लैंग्वेज है. So you can start learning this solidity, and you can develop your decentralized applications using ethereum blockchain also. Okay. और कुछ डिटेल्स प्रोबेबली हम किसी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. अभी से इतना ही रखते हैं. होपफुली आपको कुछ ब्लॉकचेन का कुछ फंडामेंटल्स क्लियर हुए होंगे, राइट? थैंक यू.